Hello, dear student. I'm your teacher Vishal Mukherjee. Welcome you again to a new video. So, after a very long time, I'm going to upload a video. So, before starting the chapter, heat, I'm going to tell you something that it's the part third, and before the part third, you need to complete part one and second, then you can easily understand part third. So now I'm going to start our part third. So student, here is our first topic, which is transfer of heat. It means how heat transfer from one medium to another medium. Okay, in this slide you know how heat transform from one medium to another medium. So now I'm going to read the slide. Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. Okay, it is because the heat passes from the flames that when the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Okay, why it cools down means here इन दिस स्लाइड बोला जा रहा है कि जब हम लोग फ्राइंग पैन को, जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम लोग खाना वाना बनाते हैं, उसको जब हम हीट पे बैठाते हैं या किसी फ्लेम के अंडर बैठाते हैं तो क्या चेंज होता है और वो धीरे धीरे क्यों ठंडा हो जाता है. ओके, नाउ द हीट इज ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. ओके, so you can understand that the both cases the heat follows from a hotter object to a colder object. Okay, so यहाँ पे बोला जा रहा है कि heat can transform from a hotter object to a colder object, right? So I think you do not have any doubts in this slides. Because of that, it's a very easy slides. Okay, the transfers of heat. So here is a very simple examination. When we take a pan and we put it over the flame, and we can easily observe the flame. The pan becomes hot, and after that it cools down slowly. Okay, so student, now I'm going to show you an activity. Through this activity you can easily understand how heat transfer from one medium to another medium, right? And how heat transfer. So here we have activity. For this activity we need a rod or a flat strips of a metal. Okay, first we need a metal strips. Okay, say of the aluminum or iron. It could possible you can take any types of iron sheet or a metal sheet. Okay, fix a small wax pieces on the rod. After that, when we take a rod, and after that we need to do what we need to do, we need to fix some wax over it. Okay, and this pieces should be a neatly equal distances. Okay, and when we stick out the wax into them, so we need to find the equal distance in between them. Okay, next step, we need to stand the rod throughout any break or any types of things which can stuck the rod into them. Okay, if you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks, which I already said you. Now the heat, so now the heat, the other end of the rod and that we observed. So what happens to the wax pieces? Okay, so now here is our question. What happens with the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which pieces falls first? Do you think that the heat is, how the heat is transferred? So look, here is the picture how we set all this arrangement. First we need to take a rod like this, and after that we need to set the rod in between the bricks. So, and you can also set the rod in many types of other ways. Okay, after that we need to fix some wax into the iron rod. After that, when we heat up the metal strips. Okay, and when we heat up the metal strips, what's going on? So the wax going to fall down in the ground, right? So here is the question, which pieces of the which piece
falls the first? Okay, do you think, what do you think? So that we, now I am going to explain a very important thing, which is what are conductor and what are insulators. Okay, please write down the things in your copy and it's a very important things. So यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर्स, इसको आप अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके एग्जाम में आने ही वाला है. Okay, so first I'm going to explain what are conductors. Okay, so the materials which allow to heat to pass through them easily are called conductors. So it means any types of material in which the heat can passes through easily, like a metal or any types of things which easily the heat can easily spread throughout it, so that's called conductor. सो इसका मीनिंग हुआ कि जो भी मटेरियल में हीट जो होती है, हीट का ट्रांसफ़र रेट और जो हीट जो इजीली ट्रांसफ़र कर जाती है उसको कहते हैं हम लोग कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर. सो ये सब जो चीज़ें हैं दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स मीन्स जिसमें हीट इजीली ट्रांसफ़र कर जाती है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द इंसुलेटर्स. ओके, the materials which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductors of heat. As the plastic, wood, poor conductors are known as insulators. ठीक है, सो हम लोग इंसुलेटर्स को यहाँ पे पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं. और जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो हीट को पास करने नहीं देते अपने में से. पास होता है, ऐसा भी नहीं कि 0 to 0 होता है, बट बहुत स्लोली पास का जो पासिंग रेट होता है, द ट्रांसफ़र रेट्स ऑफ द हीट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है. ठीक है, मतलब बहुत ही मिनिमम होता है. सो दैट्स कॉल्ड इंसुलेटर्स. सो इंसुलेटर्स क्या है? इफ़ समवन आस्क यू गिव मी एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स एंड गिव मी एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, then what's the answer? So if someone asks you what are the conductors, then you can easily say the good conductors of heat are the aluminum, copper, metal, irons. All are the metals are the good conductors of heat. Now if someone asks you can you give some examples of insulator, so what are the answers of the insulators? So you can easily say plastic and wood. So plastic and wood are the bad conductors or the insulators of heat. So please write the points conductors and insulators in your copy. So student, now I'm going to explain you a very interesting and very important thing, which is land breeze and sea breeze. Okay, it's a very important question. What are land breeze and what are sea breeze? So I'm going to explain you. So please you need to write all the things in your copy, what are land breeze and what are the sea breeze. Okay, so here the people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon during a day. Okay, the land gets heated faster than the water and the air over the land becomes hotter and rise up. Okay, the cooler air from the sea rushes in towards the land and takes its place. Okay, the warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. Okay, so I know this is a very interesting things and I'm going to explain you. So in a easy language, if we you can easily see these types of things in our coastal areas or the areas near about the seas. Okay, so in these types of places we generally see the जो which the land is जो होता है ना land, so it's becomes hotter and rises up very fast. Okay, and the airs, when we float the air from the seasides, it's very cool. Okay, so that's called sea breeze. Generally I will explain you later it in on Hindi, so don't panic. Now the air, next point, the air from the sea is called the sea breeze. I already explained you. To receive the cooler sea breeze, the window of the houses in the coastal areas are made to face to the sea. Okay, at night it is the exactly reverse. The water cools down more slowly than the land and so the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze.
So students, now I'm going to explain these things in Hindi that you can easily understand the things. So जो लैंड ब्रीज होता है, ओके, जो सी ब्रीज होता है, फर्स्ट वी हैव सी ब्रीज. सो ये जो चीज़ होता है हमको जनरली कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलता है, जो हम लोग के जो समुद्र के जो किनारे जो जगह होते हैं वहाँ हमको ये चीज़ देखने को अच्छे से मिलते हैं. सो वहाँ क्या होता है एक्चुअली, वहाँ क्या होते हैं कि जो लैंड होता है, जो ज़मीन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वार्म होता है, गर्म बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है. और हमारा जो सी रहता है उसके मुकाबले ठंडा रहता है. सी मतलब जो समुद्र रहता है उसका मुकाबले बहुत ठंडा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ लैंड. सो व्हेन द लैंड, जो ब्रीज होता है, ब्रीज मीन्स हवा, जो हवा होती है जो उस, तब वो हवा कैसे चलती है, सी टू लैंड के तरफ चलती है, दैट्स कॉल्ड सी ब्रीज, ओके. सो और उसके बाद जो होती है, देखिए लैंड ब्रीज जो होती है उसी टाइप जब रात हो जाता है ना, रात हो जाता है तो लैंड जो सी का पानी रहता है वो लैंड के मुकाबले बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है, कूलर हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से कूल डाउन हो जाता है. और रात में वो लैंड ब्रीज चलती है, लैंड टू सी, ओके. इसीलिए जो भी कोस्टल एरियाज़ के घर या कुछ विंडो बनाए जाते हैं वो टूवर्ड्स सी के तरफ मुँह करके बनाए जाते हैं, राइट. नाउ यू कैन नो व्हाट आर द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ओके. इसको अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस बार भी एग्जाम में आएगा आपका व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड व्हाट आर सी ब्रीज, राइट. सो वेट, आई एम गोइंग टू शो यू ऑन अनदर स्लाइड which you can easily understand what are sea breeze and what are land breeze. Look, in the daytime, here is a diagram, okay. In the daytime, what, in the daytime you look, the breeze comes from towards the sea and going through towards the land, okay. It comes towards the sea and going through the lands like that. Here the cool breeze and it's become hot, and rotation of the breeze, you know, that's called sea breeze. Comes towards the sea and go throughout the ground, and again this cycle made cool to hot, and then this happens only on a daytime. In the night time, in another slide we have night, okay. So look, here the breeze going towards the land to the sea, okay, land to the sea. Here look out the arrows, here the breeze going through down the land to the seas, okay. So cooler air from the land to the hotter air from the seas, okay, that's called sea breeze. So you need to make a clear diagrams of land breeze and sea breeze. You can pause out the video, it's a very important thing. You doesn't need to make the figure like that in a scenery type or a landscape type. आपको बस ये जो नीचे जो फिगर्स बने हैं ये इजी वाले यही बनाने हैं, ओके. ऊपर के फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, और आप ऊपर लिख लीजिएगा डे टाइम और नाइट टाइम. डे टाइम यू कैन जस्ट ये जो नीचे वाले फिगर हैं कूल हॉट वही वाला बनाइएगा, दैट्स इनफ. ऊपर की जो सीनरी वाली फिगर है वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा और नीचे लिख भी दीजिएगा, ठीक है. फिगर ऑफ सी ब्रीज एंड स्टूडेंट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर लास्ट पॉइंट. सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीट आवर चैप्टर हीट. सो हेयर वी हैव लर्नड दैट यू हैव लर्नड, ओके. सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा उसका एक ग्लिम्स दूंगा आपको जल्दी से, जिससे कि आपको पिछले वाले जो चीज़ हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और हमने इस चैप्टर के थ्रू क्या क्या सीखा दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ओके. आवर सीन्स, ओके, our scenes of touch not always reliable to guide the degrees of the hotness of an object, okay. So we cannot find the exact temperature of an object through the touch, okay. So you cannot explain the means reliable temperature, like how degree centigrade, it means 30 degree centigrade, 40 degree, we cannot explain throughout our sense organs, okay. Temperature is measures of the degree hotness of an object. Thermometer is a device for measuring temperature, that you know. We have two types of thermometer, a clinical thermometer and a normal doctoral thermometer. So clinical thermometer is used to measure our body temperature, that I already explained in our part 2. If you have any doubts then you can rewatch the part 2, and it's a very important thing.
water clinical thermometer. The range of the thermometer is lying between 35 degree to 42 degree. For other purpose that we use at the laboratory thermometer. For more than these types of things, we use laboratory thermometers beyond these types of range. Okay, the normal temperature of the human body is 37 degree centigrade. Okay, you need to write the things. The temperature of the human body is 37 degree temperature. The heat flows from the body to a higher temperature to the body to a lower temperature. Things that you know, that heat passes from the higher to a lower. Okay, I also give you example of candle and rod strips. Okay, so in generally the heat transfers via conductions in a liquid, and the gases it transfers by the convections. No medium is required to transfer the heat by the radiations. All the materials that we allow to heat passes through the easily are the conductors of the heat, that you know what are the conductors and what are the insulators. So please, you need to write the whole the things in your copy. If you have any doubts, and if you have any doubts, you can watch the videos again and again 2 times or 3 times. Okay, so in this heat chapter we have total 3 part. Okay, part 1, part 2 and part 3. Here is the last part, part 3. So if anyone need to learn the things, and if anyone want to know these things properly, then they have to watch both the chapters. Okay, both the parts 1, 2 and 3rd, then you can understand the things. If you think that you can just see the part 3, then you can easily understand these things, but that could not happen. Okay, you need to watch the whole series, part 1, part 2 and part 3, then you can know what are the heats and how it transform and how the things go. So student, as always, it's time for your homework. और जैसा कि मैं हमेशा की तरह होमवर्क देता हूँ, आज भी आप लोग के लिए होमवर्क है. और नाउ टुडे वी हैव ओनली 4 क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट, हाउ heat transfer from one medium to the another medium. Second one, show an activity that transfers of heat with a proper diagram. So you need to make the diagram of metal rod strips and wax. Okay, what do you know about the conductors? यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडक्टर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. व्हाट डू यू नो अबाउट द कंडक्टर्स, ठीक है, एंड इंसुलेटर्स. एंड लास्ट वन, व्हाट आर सी ब्रीज एंड व्हाट आर लैंड ब्रीज. ओके, तो यही 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसके आपको आंसर करने हैं, ठीक है. और आज बहुत दिन बाद हम लोग ये वीडियो, बहुत दिन नहीं मीन्स हमारे पूरे वैकेशंस के बाद हम आज पहला वीडियो अपलोड किए हैं. आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा. कमेंट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो. ओके, और आपको क्या करना है, इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से उसके आंसर्स करने हैं और आपको याद भी कर लेने हैं, ठीक है. जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको याद भी कर लेने हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिट फर्स्ट एग्ज़ाम. तो ये जो आपके जो चीज़ करा रहे हैं ये ऐसे नहीं करा रहे हैं, ये आपकी यूनिट में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है. इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक. और रही बात, ये करके आप हम जैसा हम लोग पहले करते रहे हैं, इसको हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा. और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग इफ़ यू हैव कोई अगर डाउट आती है, कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है, देन यू कैन ईजिली मैसेज मी. ओके, सो होप you can understand all these things. So stay home, stay healthy, stay safe.